So namaskar all of you. तो हमरो लास्ट सेशन रे आमे कवर करथिलु जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा. ओके एक्सक्यूज मी. पार्ट 1 रे एटा आमे कवर करथिलु. 20 क्वेश्चंस अच्छी टोटली जो थरे ए एंटायर येटा कवर होची. ओके सो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा एई 20 क्वेश्चंस भितरु ही जहा क्वेश्चंस आपनकर आसीबार चांसेस अछि. आ बाहरु प्राय क्वेश्चंस आसीबनी. प्रथम 10टा जोटा हमें लास्ट सेशन रे देखथिलु सेटा आपनकर ता जनरल क्वेश्चन सब थिला. ओके टिके से 10टा क्वेश्चन आगे देखि दबा और लास्ट 10टा क्वेश्चन जोटा कि 20टा क्वेश्चन को कंप्लीट करिवो सेटा आज हमें डिस्कस करिवा. लास्ट जो 10टा क्वेश्चन माने आज जो क्वेश्चन अच्छी सेगुड़ा टिके एनालिटिकल क्वेश्चन अच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन नुह. प्रथम क्वेश्चन सुड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन थिला जोटा कि आपण ता भितर प्राय आम जहाँ डिस्कस कलु प्राय सब गुड़ा ऑलरेडी पढ़ी सारी. तेणु गोटे टाइप रो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा डिस्कस करथुलु बोली आपण कहि परिबे. फर्स्ट 10टा जो क्वेश्चन थिला आज जो 10टा क्वेश्चन हमें डिस्कस करिबा सेटा टिके एनालिटिकल क्वेश्चंस अछि. किंतु गोटे जिनस हला सेही क्वेश्चंस गुड़ा आपणकर हेल्प करिवो आपनको जदि किछि इनडायरेक्ट कि एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़िला ताहले आपण ताको इजीली करि परिबे लिखि परिबे. और जो कंटेंट गुड़ा अच्छी जो पॉइंट्स गुड़ा दिया आइछि से गुड़ा बहुत अलग आंसर्स रे भी आपण दे परिबे. एक्चुअली जोटा मु फर्स्ट रे भी कहितली कि टेस्ट सीरीज रो सबुठु इंपोर्टेंट ताको तार एनालिसिस रो किंबा ताको यूज करिवार बेस्ट वे हला आपण गोटा अलग खाता करिवे जो थरी कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ा लिखिबे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. हला सेही क्वेश्चन ता बुली की भी पढ़ी पारे जदि एक्सक्यूज मी जदि बुली की भी पढ़ला किंबा अलगा को बाटरू पढ़ला आपण आराम रे सेटा लिखि परिबे. ओके सेम पॉइंट्स रे क्वेश्चन मे बी डिफरेंट बट ऑफ द सेम डोमेन ऑफ द सेम टाइप बट यू ऑलरेडी नो द आंसर यू ऑलरेडी नो द पॉइंट्स. तो प्रथम खाली 10टा क्वेश्चन मु आउथरे जो माने आज फर्स्ट सेशन ता देखुचंती एटा ऑलरेडी यूट्यूब रे अच्छी आपण देखि दे परिबे. मु त लिंक टा भी दे देबी ए जो हमरा ए सेशन ता सरला परे. डिफाइन कलिंगा सब स्टाइल विद इन नागरा ट्रेडिशन एंड डिलिनिएट इट्स 3 प्रिंसिपल टेम्पल टाइप्स रेखा देउଳ पीड़ा देउଳ और खाकरा देउଳ हाइलाइटिंग देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस विथ सुटेबल एग्जांपल्स. एटा ऑलरेडी ओसीएस रे पढी सारची रेखा देउଳ पीड़ा देउଳ ओके और खाकरा देउଳ ऊपर. सेकंड क्वेश्चन जोटा मैं डिस्कस करथिलु सेटा थिला एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन ओडिशा टेम्पल द बाड़ द गंडी एंड द मस्तक एंड डिस्कस देयर सिंबॉलिक एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस. हला नंबर 2 दिस आल्सो वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल. थर्ड क्वेश्चन जोटा मैं देखथिलु द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी रिप्रेजेंट्स द एपोजी ऑफ रेखा देउଳ डिस्कस इट्स स्पेटियल लेआउट द विमान जगमोहन नाट्य मंदिर एंड भोग मंडप एंड स्कल्पचरल प्रोग्राम. तो जोड़ा मु कहली एगुडा में सब क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे हमें डिस्कस करछु. तेनु एटा सब 300 वर्ड माने 20 मार्क क्वेश्चन हिसाब रे दिया आइछ. वर्ड लिमिट ता बहुत इंपोर्टेंट सेटा जहा आपण प्रैक्टिस करछंदी वर्ड लिमिट ता माइंड रे रखिबे. क्वेश्चन 4 मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर इज कॉल्ड द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर. एनालाइज इट्स तोरण लैटिस्ड विंडोज एंड डेकोरेटिव मोटिव्स as markers of a stylistic transition. Question 5 हमें देखथिलु examine how Lingaraj temple synthesizes earlier forms into Bhubaneswar's temple building tradition. How does it plan and elevation reveal about Somavamsi Ganga period innovations? Question 6.
critically evaluate the Sun Temple Konark as a chariot temple, discuss its structural conception, iconographic scheme, and reasons for partial ruin with reference to material and environmental factors. माने बहुत ही detailed question थिला जोटा हमें discuss करथिलु काहे की भांगी गला all those things. Okay. Question 7. With reference to Vaitala Deula Bhubaneswar, explain the Khakara Deula form and its Shakta associations. How does it differ from Rekha or Pidha examples in plan and superstructure? Question 8. Discuss Rajarani temple's exterior sculptural treatment, that is Naika, Naganagini and the Dikopalas, and what it indicates about aesthetics and patronage in 11th century Odisha. Question 9. Trace the evolution of Odisha temple architecture from early Parshurameshwara Brahmeshwara to later Ganga monuments, correlating dynastic phases with change in plan, elevation and ornament. It is बहुत important. Various phases of temple architecture. Last question जोटा हमें discuss करथिलु जोटा direct question भितरु और easy questions भितरु last question टा. Discuss the construction materials and techniques like khondalite, laterite, sandstone and dry masonry used in Odisha temples and assess their implications for durability and conservation. এই কোশ্চেনটা ডাইরেক্টলি কেবে পড়িনি বট স্টিল দেন আপনাকে জানিবার আছে এটা পড়ি পারে কোউ ম্যাটেরিয়াল ইউজ হোটলা আমর তো আমি আজি 11 টু 20 টা ডিসকাস করিবা উইথ দ্যাট আমার গোটে মডিউল যাথরু গোটে কোশ্চেন তো শিওর পড়ুছি কেবে কেবে দুইটা কোশ্চেন বি পড়ি যাই পারে বট গোটে কোশ্চেন শিওর আ ভিতরু ওকে তো সেইটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাব সেই যে 20 মার্কস আছে আপন রেডি রহিবে তা পই কোশ্চেন 11 को আসন্তু কোন ডিমান্ড কোশ্চেন रो टेम्पल सिटी ऑफ भुवनेश्वर is an urban sacred complex. ये जो 11 to 20 देखिवा एगुडा ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नो डायरेक्ट क्वेश्चन नो कि हां एई मंदिर रे कोन तार फीचर से टाइप रो नो एगुडा सब एप्लीकेटिव क्वेश्चंस उडा एतर दी तीनटा डोमेन को आपन को मिसी की लिखिवा पई पड़िबो ओके बट जो पॉइंट्स उडा एठी हम डिस्कस करिबा सेई पॉइंट्स उडा आपन को नोट्स लिखिबार अछि सेईटा अलगा कोनोसी भी जोटा सेई रिलेवेंट टाइप रो क्वेश्चन थिबो सेथरे आपन आराम रे यूज करि परिबे ओके टेस्ट सीरीज रे जेमती होची सेम जिंस कि आपनकर जो क्वेश्चन टा टेस्ट सीरीज से दिया हिची सेही पॉइंट्स रे आउ को क्वेश्चन रे भी आराम रे आपन लिखि परिबे से फैक्ट्स हो कि सही डायग्राम्स हो एक्सेट्रा सो टेम्पल सिटी ऑफ भुवनेश्वर इज एन अर्बन सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एनालाइज द स्पेटियल इकोलॉजी ऑफ टैंक्स प्रोसेशनल रूट्स एंड टेम्पल क्लस्टर्स इन शेपिंग रिचुअल एंड सिटी फॉर्म तो प्रथम बुझंतु से पचाउची कोन कि स्पेटियल इकोलॉजी ऑफ टैंक्स ओके जो फेमस सैक्रेड टैंक्स आपनकर रहिची ओके सेटा से पचाउची फर्स्ट तो यही तीनटा जिनस हमको फोकस करने पड़ो कौन ना टैंक्स गोटे प्रोसेशनल रूट्स गोटे आउ टेम्पल क्लस्टर्स गोटे है टैंक्स माने वाटर बॉडीज ओके जो गुडा की आपनकर रिलीजियस यूज रे टेम्पल यूज रे आसुची ओके तो सेटा गला तापरे प्रोसेशनल रूट्स जो प्रोसेशंस आपनकर रहउची प्रोसेशंस माने आपनकर जेमती रथ यात्रा हरिका हैला कि डिफरेंट से टाइप रो यात्रा हैला तो सेटा प्रोसेशनल रूट्स हैला सेटा एंड टेम्पल क्लस्टर्स ओके टेम्पल क्लस्टर्स मींस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ओके सो एई तीनटा ऊपर हमको आंसर ता दबार अछि तो दी लाइन रो इंट्रोडक्शन अपन देबे इंट्रोडक्शन शुड बी डायरेक्ट इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेटेड to the demand of the question. Just do not repeat the question in the introduction. Okay. So, कौन introduction एठी दिया हला? Bhubaneswar's old town, that is Ekamra Khetra,
developed as a living urban sacred complex where religion, environment and settlement patterns are closely interconnected. Okay, so tanks, temple clusters and ritual routes together shape the city's spatial identity, cultural memory and everyday religious life. Okay, so this part you can write. तापरे आसिला तीनटा जिनस से कहितला. फर्स्ट हला टैंक्स, तो जो सैक्रेड टैंक्स और वाटर स्केप्स. ओके, तो ऑब्वियसली अपन भुवनेश्वर कथा कहउछन तो यू विल स्टार्ट विथ बिंदुसागर. ओके, सो बिंदुसागर टैंक acts as spiritual and geographical core of the city, essential for Lingaraj temple rituals. ओके, तापरे केमिति सेटा जहा क्वेश्चन रे से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इट इज शेपिंग द सिटी. इट रेगुलेट्स माइक्रोक्लाइमेट, सपोर्ट्स सैक्रेड एबल्शंस. ओके, जंती कि जाई सब डिफरेंट रिचुअल्स अछि. ओके, सो एबल्शंस माने बेसिकली टू बिफोर एंटरिंग द टेंपल और बिफोर स्टार्टिंग ए इंपोर्टेंट रिचुअल. ओके, सेठी जाई कि गोडो धोला कि से टाइप रो एबल्शंस. फेस्टिवल्स एंड सस्टेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ सराउंडिंग एरिया. ओके, तापरे अदर टैंक्स आर आल्सो देयर. ओके, like the Devi Padahara, Kapileshwara and other smaller kundas form an interconnected sacred water network. Okay, तो ये टैंक्स आउ कौन कौन करछंती, दे क्रिएट घाट्स, कोर्टयार्ड्स, पब्लिक कांग्रेगेशनल स्पेसेस जोटी कि लोक माने आसिकी से माने गैदर होचंती एंड इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ टेंपल्स इन द लैंडस्केप. ओके, जेहेतु तीनटा पार्ट से देइची आमे एठी चारिटा पॉइंट लिखिलुनी. ओके, ताठो अधिक आमे लिखि परिबानी एंड आमे कंसीडर करछु कोन एगुडा 20 मार्क क्वेश्चन ना माने 300 वर्ड भितर हमको लिखिबार अछि. 300 प्लस माइनस 10% माने 330 वर्ड भितर. ओके, तापरे सेकंड पार्ट जोटा से पचारला प्रोसेशनल राउट्स एंड रिचुअल मोबिलिटी. परीक्षा रे गोटे जिंस खाली मन रखिबे, एठी आपनको सुविधा पई ए नंबरिंग गुडा कराइची. परीक्षा रे आपण ए नंबरिंग करिवे ना, आपण डायरेक्टली खाली हेडिंग्स गुडा लिखिबे. तो प्रोसेशनल रूट्स एंड रिचुअल मोबिलिटी. तेनु सबुटु फेमस भुवनेश्वर रे हैला द रुकुणा रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड लिंगराज. Okay, it defines a major ceremonial access from the Lingaraj temple to the Rameshwara temple, which जोटा कि माउसीमा टेम्पल हिसाब रे अपन ताको देखुछंती. ओके, ओल्ड भुवनेश्वर रे जोटा से जो रामेश्वर टेम्पल अपन जो देखिबे जेतले थ्योरी क्लास रे हम डिस्कस करथिलु, जो फर्स्ट भुवनेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. ओके, जोटा कि भरतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, ओके, रामेश्वर, ओके, और लक्ष्मणेश्वर. तो दे आर बेसिकली सिंगल, ओके, मोनो चैम्बर टेम्पल्स. तमाने केवल सेथरे गर्भगृहटा थिला. ओके, सेथरे मुखशाला किंबा जगमोहन नथिला. सेटा परे परशुरामेश्वर टेम्पल रो स्टार्ट हला. ओके, एनीवे दिस प्रोसेशनल रोड्स इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीट विड्थ, मार्केट्स, गैदरिंग स्पेसेस एंड सेटलमेंट पैटर्न्स अलोंग द रूट. जेहेतु एटा गोटे इंपोर्टेंट यात्रा, तेनु तार जो रूट ता सेमती डिफाइन करा होची. ओके, स्ट्रीट ता केते वाइड जेमती कि सेटा जाई परिबो प्रोसेशन ता. ओके, ता मार्केट्स भी ताको छाडी के रखा होची, गैदरिंग स्पेसेस एंड सेटलमेंट पैटर्न्स, घर पर जो सब बना होची. ओके, तापरे एटा वाला रुकुणा रथ यात्रा. तापरे चंदन यात्रा इन्वॉल्व्स बोटिंग इन बिंदुसागर, reinforces the ritual link between water bodies and temples. These ritual movements structure annual rhythms of public life and festive urban identity. Okay, so it apno actually language of the answer आपण निजे लिखि परिबे. एमिति ही लिखिया दरकार नहीं, किंतु पॉइंट्स उडा
सेटा आपणकर सेम रहइबा दरकार किंबा सेतिकी इंक्लूड करिकि आपण निज लैंग्वेज रे लिखि पारे ओके थर्ड कंपोनेंट से कहतिला कोन ना टेंपल क्लस्टर्स गोटे जगह गोटे बड़ मंदिर अछि ता पाखरे आउरी छोट छोट मंदिर डेवलप हे जाउछ से गोटे हला टेंपल क्लस्टर्स ओके सो टेंपल क्लस्टर्स भीतर से कहूँ भुवनेश्वर टेंपल क्लस्टर्स सो टेंपल ग्रुप सच एज परशुरामेश्वर मुक्तेश्वर राजाराणी एंड लिंगराज कॉम्प्लेक्स क्रिएट सैक्रेड नोड्स ऑफ हाई कल्चरल डेंसिटी ओके सो यू नो दैट परशुरामेश्वर टेंपल आउ अपन मुक्तेश्वर टेंपल सेटा सेम ही कॉम्प्लेक्स रे अछि ओके खाली गोटे लॉन टे अछि इट्स द लॉन सेपरेट्स बोथ द टेंपल्स ओके सिम्पली द वेरियस टेंपल क्लस्टर्स ओके Lingaraj complex, so many temples are there within the Lingaraj complex. Lingaraj temples, towering spire establishes both skyline dominance and spatial orientation for entire old town. Okay, तेणु सेटा कहया को गले आफ्टर जगन्नाथ टेम्पल पुरी सेटा सबुठु बड़ ओके तार स्पायरटा किंबा तार जो देउलटा ओके लिंगराज टेम्पल रो सेमती हिस्टोरिकली देखिले सबुठु बड़ थिला कोणार्क मंदिर रो देउलटा जोटा कि डिस्ट्रॉय हे गला तापरे लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल तापरे आपन को लिंगराज टेम्पल ओके हाइट हिसाब रे राइट नेक्स्ट हिस्टोरिकली द प्रेजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स क्रिएटेड ए कॉम्पैक्ट वॉकेबल सैक्रेड सिटी with lanes leading from shrine to shrine. Now, this is not only true for Bhubaneswar, जिते बड़ टेम्पल सिटीज आपण देखुचंती धरंतु आपणकर काशी की आपण जदि जिबे ओके और एनी अदर रिलीजियस प्लेसेस सेठी आपण को बहुत गुडे टेम्पल्स मिल जिवो पाखा पाखी ओके एनी मेजर टेम्पल जोटी थिबो लेट्स से अयोध्या रे आपण श्री राम मंदिर जदि जिबे ता पाखरे आपण हनुमान जी को भी मंदिर अछि ता पाखरे आउरी बहुत गुडे मंदिर अछि ओके सेम इन केस ऑफ Kashi, okay. Same in case of other important, let's say South India रे भी same जिनस. अपन जदि मदुरई जिबे किंबा चिदम्बरम जिबे, okay. चिदम्बरम is a place जोटी की बहुत ancient temples अपन को मिली जिबो पाखा पाखी walking distance रे, okay. So just like that, भुवनेश्वर रे भी अपन करो जो जगह रे बड़ मंदिर टा रहिला ता पाखा पाखी बहुत गुडे अलगा मंदिर छोटो मंदिर रहिबो आउ वॉकेबल ठीक है तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम रिसेंट हेरिटेज इनिशिएटिव्स लाइक एकाम्र क्षेत्र रीडेवलपमेंट एम टू रिस्टोर विजुअल कॉरिडोर्स इंप्रूव ओपन स्पेस एंड मैनेज पिलग्रिम मूवमेंट सो रिसेंट करंट अफेयर्स जदि आपण कहि परिबे रिसेंट कोन डेवलपमेंट अछि ता संगे भी टिके हमें रिलेट करिबा तो एकाम्र क्षेत्र रीडेवलपमेंट जोटा चलछि सेठी बहुत गुडे घर फर जोड़ा ही जाइतला ताको उठाई की ओके सेठी रीडेवलपमेंट गवर्नमेंट करिसेंती तो तापरे कंपैरेटिव एग्जांपल्स इफ यू हैव टाइम यू कैन ओके इंडिया रे आउ कोठी अपन देख पर एज आई टोल्ड यू बहुत एग्जांपल्स अपन दे परिबे से कांचीपुरम रो एग्जांपल हमें नेचु गोटे ओके सो टेंपल टैंक्स एंड प्रोसेशन राउट सिमिलरली ऑर्गेनाइज द सिटी फॉर्म इंटरनेशनल एग्जांपल जोड़ा कि सबुठु बड़ मंदिर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रो ओके लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड is not in India okay ancient temples भीतर modern temples भीतर कहले एबे जो नुवा BAPS टेंपल हेछि सेटा किंतु ancient temples भीतर तो अंकोर वट ओके जोडा खमेर डायनेस्टी घरिका ताको सब सेही रिजाइम रे जतरो हेतिला ओके काम्बोडिया रे सो वाटर रिजर्वर्स एंड एक्चुअल टेंपल लेआउट्स शो ए सिमिलर सैक्रेड इकोलॉजिकल डिजाइन एटा एक्चुअली हमरो OS पॉइंट ऑफ व्यू रो लिखिया दरकार नहीं बट आपण जानि थांतु जिंसटा ओके तापरे कंक्लूजन आपण को दबार अछि ओके मैक्सिमम 1 की 2 लाइन्स तापर जदि आपण किछि मिस करि जाउ जंदी पॉइंट्स ओके ताहले यूजिंग ए डायग्राम आपण सेही पॉइंट्स उडा दे परिबे ठीक अछि सो एटा रहला कोन ना वाटर बॉडीज ओके ता ऊपर क्वेश्चन टा रहला तो ए जो क्वेश्चन 10 टा एगुडा टिके एनालिटिकल अछि नेचर क्वेश्चन 12 को असंदो compare the Kalinga style with other Nagara substyles of North India. Okay, that is Central Indian, Western Indian variants on को थे compare करिवे आपण शिखर प्रोफाइल रे ठीक है
तांकर जो स्पायर टा अच्छी ओके किंबा द सुपरस्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह तार कौन डिफरेंस अच्छी प्लान टाइपोलॉजी जो प्लान अच्छी ग्राउंड प्लान से केमिति से माने डिफरेंट एंड डेकोरेटिव ग्रामर माने जो डेकोरेशन अच्छी इंटीरियर डेकोरेशन और एक्सटीरियर डेकोरेशन से कौन डिफरेंस अच्छी ओके नागर सब स्टाइल्स भीतर राइट सो अगेन इंट्रोडक्शन आपनकर दी लाइन रो दबार अच्छी इंट्रोडक्शन टा टिके प्रैक्टिस करिवे सब इंट्रोडक्शन टा इंपोर्टेंट एथि पई काहे कि ना इंट्रोडक्शन रे आपनकर पूरा आगु जो आंसर टा आसुची ओके तार गोटे आपण मिरर इमेज देखि परिबे राइट सो इंट्रोडक्शन रे आपण the Kalingan temples of Odisha represent a distinct branch of Nagar temple tradition noted for their unique structural types and refined wall mounting systems. In contrast, Central Indian, Western Indian Nagar styles evolved differently, different shikhara forms, plan layouts and decorative approaches shaped by regional materials, patronage and cultural expression. एटा मु लास्ट ईयर भी कहितली किछटा कैनोनिकल टेक्स्ट रो आपण नाटा लिखिबे जेमति कि हमर एमे जो कहू रेखा देउल अछि पीड़ा देउल अछि ओके खाखरा देउल अछि केते प्रकार रो रेखा देउल अछि केते प्रकार रो पीड़ा देउल अछि केते प्रकार रो खाखरा देउल अछि एगुडा हमर सु कैनोनिकल टेक्स्ट रे लिखाई छि जो जेते कैनोनिकल टेक्स्ट हमर अछि ओके जो शिल्प शास्त्र रे सेथर सबुठु इंपोर्टेंट कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पय हला भुवन प्रदीप एटा ए नाटा मने रखिबे ओके नहले एटा लिखि दियंतु भुवन प्रदीप सो भुवन प्रदीप रे पूरा रेशियो प्रोपोर्शन कलिंगन स्कूल ऑफ टेम्पल्स रो कौन कौन केमती हवा कथा केते हाइट हवा कथा ओके तो बाड़ केते रेशियो रे हबो गंडी केते रेशियो रे हबो मस्तक केते रेशियो रे हबो ए सब थिला बट क्वेश्चन पचाउची आपण शिखर प्रोफाइल ओके आउ तापरे तार जो ग्राउंड प्लान आउ इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन तार डिफरेंस रो लिखिबे सो फर्स्ट शिखर प्रोफाइल को आसीबा कहिना 300 वर्ड भीतर हमको लिखिबार अछि So Kalingan temple ro shikhara profile kon. So it uses the rekha deula, that is the Carvarian tower, marked by strong vertical ribs or the poggers. जोटा कि vertical projections हमें कहूचु रथ जोड़ा कहूचु त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ नवरथ right and top with amlaka and kalasha crowning elements जोड़ा that is amlaka and kalasha. Then the pidha deula or the assembly hall जोड़ा जगमोहन okay has a pyramidal tiered roof that is the khakra deula okay the pida deula rahila apanaka assembly hall au jo olga temples re the khakra deula has wagon vault shape specially for goddess shrine shakta worship joti hue okay shakti sange related jemti vaitala mandir hela okay joti chamunda puja hue सेटा जदि आमे देखिबा सेंट्रल इंडिया रे द खुजराहो रीजन रे it features tall clustered latina shekhari spires माने कौन मेन शिखर थी पाखा पाखी आउरी भी बहुत गुड़े मिनिएचर शिखर थी ओके जोटा कि आमे गोटे वे रे आपण कहि परिबे अंग शिखर टाइप ओके अवश्य अंग शिखर टा टिके अलगा कांसेप्ट बट मेनली आमे ई सेंट्रल इंडियन रीजन रु अंग शिखर कांसेप्ट आनिचु अंग शिखर माने मेन टेंपल रो बॉडी रे से मेन टेंपल रो ही माइनेचर कॉपीज गुड़ा थी जेरॉक्स कॉपीज टाइप रो जेमति राजारानी मंदिर रे आपण देखुछन ओके सो दैट इज नॉट ए फीचर ओरिजिनल फीचर ऑफ कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मेनली सेंट्रल इंडिया रो सेटा आनाइछ ओके तापर वेस्टर्न इंडिया रे दैट इज द मारू गुर्जर एक्सक्यूज मी द गुजरात राजस्थान एरिया रे द शिखरस often appear more faceted and articulated with miniature spires arranged in geometric precision तो मेन आपण को शिखरटा थिबो मेन मंदिर रो ता पाखा पाखी माने एमती गोटे पर्वत श्रृंखला गोटे माउंटेन रेंज भले एमती देखा जाउथिबो ओके ताठू टिके कम ओके सेही पैटर्न रे आपण को पाइबे अदर शिखरस आल्सो
ओके सो एटा हला फर्स्ट डिफरेंस जोटा कि तांकर शिखर प्रोफाइल रो सेकेंड हला प्लान टाइपोलॉजी ने कोन जो ग्राउंड प्लान अछि तार से ग्राउंड प्लान टा केमते डिफर कर ओके कलिंग टेम्पल्स रे यूजुअली स्क्वायर सैंक्टम विथ 3 रथ 5 रथ और 7 रथ प्रोजेक्शंस प्राय हमर बड़ मंदिर गुड़ा सब पंचरथ जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पंचरथ ओके अपन लिंगराज मंदिर पंचरथ जोटा कोणार्क मंदिर थिला तार जो देउलटा सेटा भी पंचरथ थिला ओके 3 रथ है बहुत सिंपल जोड़ा इनिशियल जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ भुवनेश्वर टेम्पल्स ओके लक्ष्मणेश्वर शत्रुघ्नेश्वर भरतेश्वर से मंदिर गुड़ा 3 रथ सेमती सप्तरथ नवरथ एग्जांपल्स भी अच्छी भुवनेश्वर रही ओके ए linear temple sequence often includes the vimana okay that देउल जोटा which is the superstructure over the sanctum sanctorum गर्भगृह ऊपर जोटा बनाई छे प्रकार तापरे आसिला जगमोहन जोटा कि हमें नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे ताकू टेक्निकली मुखशाला बोली कहूछु ओके जगमोहन कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में कहूछु तापरे नाट मंडप एंड ऑफ नाट मंडप नाट मंदिर भी बहुत जगह ताकू रेफर कराउची एंड द भोग मंडप ओके जोटी की भोग दिया होछ और इंटरेक्शन पे आपनकर जगह रही सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स रे फ्रीक्वेंटली बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स ओके तो जगती विथ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ मंडप अंतराल एंड गर्भगृहस ओके समटाइम्स इन पंचायतन लेआउट पंचायतन कौन इट इज ए ग्राउंड लेआउट प्लान जोटी की इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स ए जो पंचायतन आपण कहउचंती एटा दीटा संस्कृत वर्ड रु आपण डिराइव करचंती कोन प्रथम हैला पंच which means 5 and ayata which means to capture that means the central deity has captured 4 other deities okay ta mane जोटा सेंट्रल डीटी अछंती एंसिलरी डीटीज आउ 4 जण अछन पंचायतन लेआउट ओके तापरे वेस्टर्न इंडियन जदि आपण देखिबे लार्ज पिलर हाउस ओपन एंड ऑर्नेट मंडपस porches on multiple sides and integration of step tanks in temple patrons ओके जेमति कि आपण देखिबे सन टेम्पल कोणार्क रो नुवा मोधेरा गुजरात रो ओके सेठी आपण बहुत गुडे एमति स्टेप टैंक्स देख परिबे ओके तापर आसिला डेकोरेटिव ग्रामर तो डेकोरेशन जो इंटीरियर आउ एक्सटीरियर डेकोरेशन केमति कोन रही छी तो कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे क्लियर बेस मोल्डिंग्स लाइक द खुरा ओके द कुंभ एंड द पट एंड वेल डिवाइडेड वॉल जोन्स ओके जो वॉल रो जो बाड़ आमे जोटा कहूछु ओके तळ जंग द बंधन एंड द बारांडा ओके बैलेंस्ड sculpture and symbolic doorway ornamentation right central india jodi dekhibe dense sculptural bands including celestial figures mythological themes everyday scenes and expressive figurines okay sei motifs re decorate heji apankara central indian temples and western indian temples extremely intricate carvings on pillars ceilings and walls often leaving no surface plane okay marble temples show delicate geometrical ceilings right तमने बहुत ही भलो रे इंटीरियर्स रे भी अपन देखिबे ओके आउ बाहर भी देखिबे बहुत आर्टिस्टिक काम सेथरे हिच ओके जदि हमें एग्जांपल्स नबा तो ओडिसा रु लिंगराज टेम्पल नहीं परिबे मुक्तेश्वर टेम्पल नहीं परिबे ओके आउ सेंट्रल इंडिया रु जदि नबा ताले कंदारिया महादेव जोटा खजुराहो रे ओके आउ जदि हमें वेस्टर्न साइड रु नबा वेस्ट इंडियन ओके जोटा कि सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जोटा सब ग्रुप गुजरात और राजस्थान रो सब ग्रुप ता जोटा हम कहतली सन टेम्पल एट मोधेरा ओके अब्रॉड आपन को दरकार नहीं बट अंकोर वट ता अब्रॉड जदि आपण एग्जांपल दवा पे चाहू चंती ताले अंकोर वट कॉम्प्लेक्स ओके इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स तापरे हमको दी लाइन रो कंक्लूजन दबार अछि ओके सो 332 वर्ड्स रो ए आंसर ता रहला जो थरे जा क्वेश्चन पचार छी हमको सब पॉइंट्स हमें कवर करिछु ओके आउ जदि समय रो अभाव
ताहले जो पॉइंट्स आमे छाड़ीचु से हिसाब रे आमे गोटे एमती डायग्राम करके दे दे परिबा। मन रखंतु डायग्राम टा रिपीटेशन करिवेनी, जो जिनसटा आपण लिखिचंती सेईटा को पुणी उतरे डायग्राम रे रिप्रेजेंट करबा दरकार नहीं हैला। जो जिनसटा लिखि परन मु 15टा पॉइंट जानि छु, लिखुची 6टा पॉइंट कि 7टा पॉइंट समय होनी, बाकी जो 8टा पॉइंट हैला सेगुडा मु एई एमसी दे दे परिबी। अदरवाइज पूरा पेपर टा सारीबा डिफिकल्ट हो जाए केबे केबे। तेणु जदि मु 17टा क्वेश्चन खंडे ठीक रे करची आउ 10-15 मिनिट अछि 3टा क्वेश्चन रहला, ऑब्वियसली मु लिखि परिबिन तो से क्वेश्चन। तेणु किछिटा बेसिक जिंस लिखि कि तापरे ए स्ट्रक्चर्स रा कर दे पारि। ओके, क्वेश्चन 13 को आसंतु। इवैल्यूएट द रोल ऑफ वाटर आर्किटेक्चर लाइक द पुष्करिणी और द टेंपल टैंक्स एंड एंसिलरी स्ट्रक्चर्स। तेणु वाटर आर्किटेक्चर ऊपर लिखिबे आउ एंसिलरी स्ट्रक्चर्स इन ओडिशा टेंपल्स विथ एग्जांपल फ्रॉम एकाम्र क्षेत्र। से पूरा पर्टिकुलरली कहूची कि भुवनेश्वर रा एग्जांपल्स आपण नियंत। ओके, सो इंट्रोडक्शन अगेन 2 लाइंस रो डायरेक्ट टू द पॉइंट आउ आगु हमें कोन लिखु आंसर रे सेटार मिरर सेटा हबा कथा। इन ओडिशा टेंपल आर्किटेक्चर water bodies such as pushkarinis or temple tanks are not merely utilitarian. Okay, माने खाली एरिया नो कि सेडा पानी खाली ताटू निया हबो। ओके, दे आर सैक्रेड इकोलॉजिकल एंकर्स। नियंतु एटा गोटे कीवर्ड मिलला, इकोलॉजिकल एंकर्स। ओके, एटा बहुत ही इंपोर्टेंट। एई गुडा जदी आपण माइंड रे रखचंती ताले एई क्वेश्चन टा न पडू आ गोटे कोन क्वेश्चन पडू, किंतु आपण पॉइंट टा लिखि परिबे। That shape ritual, geography and community life. In Ekamra Kshetra, that is Old Town Bhubaneswar, these water structures integrate, hela, eju yeta, again, this phrase, integrate religion, environment, urban planning and cultural memory into a living sacred landscape. Okay, so what is the role of water architecture and ancillary structures? Number 1, rituals and purification. So the tank serves as space for ritual cleansing before temple entry. Like the Bindusagara tank near Lingaraj temple is central to daily abhisheka rituals and festivals such as the Chandana Yatra. Then spatial and urban organization. एठी जो 1 2 3 4 देछि आपण बुलेट्स दे देबे काइना सेटा पुनी कंफ्यूज हे जिवो आपण को एक्चुअल क्वेश्चन नंबर संगे। ओके, स्पेटियल एंड अर्बन ऑर्गेनाइजेशन। तेणु एठे जो पॉइंट्स उडा देछि आपण को जो की नोट बही गोटे बनेबे जोटा कि सब बेले आपण रिवाइज करथबे सेई थरे हेडिंग्स उडा सब हेडिंग्स उडा लिखि देबे। ओके, काइना आपण कांसेप्ट टा बुझी जाइचंदी, तेणु आपण तार जो एक्सप्लेनेशन टा निज लैंग्वेज रे दे परिबे। स्पेटियल एंड अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, the sacred urban layout radiates around Bindusagara, influencing temple placement, processional routes and settlement patterns, जोटा कि आरा क्वेश्चन में भी देखी थिलु। Smaller tanks like Devi Padahara, Jamuna, Ganga Yamuna tank and Kapileshwara tank create localized worship circuits and cultural nodes. Localized worship circuits and cultural nodes. Okay, then water resource and microclimate. Temple tanks support groundwater recharge, stabilize local humidity and provide microclimate cooling. Say पाखापाखी area, especially in dense shrine clusters. तमान जोटी बहुत गुडे मंदिर थिबो पाखापाखी। Okay, then community gathering and cultural continuity. Okay, ghat step rest houses like the dharmashalas and mathas near tanks offer spaces for public congregation, जोटी की गोटे पर्टिकुलर फेस्टिवल की रिचुअल पाई बहुत जण लोक आसिकी सेठी गैदर करि परिबे। पिलग्रिम हॉस्पिटैलिटी, ए धर्मशालास गरिका रेस्ट हाउसेस गरिका हे गला एंड रिलीजियस डिस्कोर्स। ओके, मठस एंड ऑल दे रीइंफोर्स कम्युनिटी आइडेंटिटी, डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड टेम्पल इकोनॉमी। ये कीवर्ड्स उडा मन रखले जो भी क्वेश्चन पढ़ू रिलेटेड टू टेम्पल्स एंड ऑल यू कैन ऑलवेज यूज दिस कीवर्ड्स। ओके, जोटी रेलेवेंट थिबो। तापरे हेरिटेज एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस।
सो कौन प्रोब्लेम होची जेमती आपण देखिबे ई सब मंदिर पाखा पाखी घर भर सब बनै दैछन सो एनक्रोचमेंट को जगह तो मंदिर एरिया को भी एनक्रोच कर दैछन फॉर एग्जांपल आपण वैतल मंदिर देखिबे ओके सेठी ऑलमोस्ट माने दे हैव कम इनटू द साइड ही कंस्ट्रक्शन सब हो जाइछ तरह घर घर ओके एनक्रोचमेंट पॉल्यूशन एंड सिल्टेशन इफेक्ट ओके टैंक क्वालिटी वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजी recent redevelopment effort focus on tank cleaning तो गवर्नमेंट जेमती कि एकाम्र क्षेत्र ओके जोटा कि आपनकर तार रेनोवेशन टा पूरा चलची घाट रेस्टोरेशन improved circulation of water and visual heritage corridor revival हैला एई पॉइंट्स रा बेसी इंपोर्टेंट कोन करा हिची कोन करा हबा दरकार राइट एटा हमें 250 वर्ड्स से लिखिजु ओके क्वेश्चन 14 को आसंदो डिस्कस द आइकोनोग्राफिक डिस्टिंक्टिव्स ऑफ ओडिशा टेंपल ओके कौन आइकोनोग्राफिक डिस्टिंक्टिव्स के आइकोनोग्राफी ऊपर जदी क्वेश्चन पड़ जिवो ताले मेनली अपन कोन लिखियार अछि सूर्य पैनल्स ओके मिथुनस ओके द व्यालस द गजसिंहस एंड द नवग्रहस ओके और भी अच्छे किंतु इतकी लिखला वाले हमर 300 वर्ड्स हे जो एंड रिलेट देम टू थियोलॉजिकल एंड रीजनल एस्थेटिक्स आ ऊपर प्रथम टिके लिखबा तापरे रिलीजन संगे थियोलॉजी संगे आउ रीजनल एस्थेटिक्स ओके यानी कलिंग एपटे हला ओके सेटा केमती आपनकर तार कनेक्शन कोन रोज सो ओडिशा टेंपल आइकोनोग्राफी represents a refined visual language where sculpture, symbolism and theology work together to create a sacred environment. In the Kalinga tradition, motifs such as the Surya panels, Mithuna couples, Vyalas and Gajasimha guardians and the Lavagaha lintels communicate cosmic order. Hela, eta important. कौन represent करछन सेउडा protection, fertility and moral values okay while also reflecting regional artistic identity तो प्रथमे sun god panels surya is portrayed as radiant cosmic ruler upright wearing high boots and holding lotuses symbolizing life energy time and royal authority okay Odisha emphasizes Surya more prominently than many other regions, reflecting historical links with maritime trade, solar worship, and royal patronage. The Konark Sun Temple expresses this iconography on a monumental scale through chariot symbolism, wheels representing time cycles, and dynamic movement. Okay, so এটা first part है sun panels okay tapare the amorous couples or the mithunas the mithuna and naika figures express auspiciousness love fertility and worldly joy okay reinforcing that spiritual life includes celebration of beauty in temples such as Mukteshwara and Rajarani the sensuality is subtle graceful and rhythmic so sensuous but at the same time it is subtle graceful and rhythmic graceful sensuality okay emphasizing the Odishan preference for elegance over excess very important phrase आपण मन रख परिबे elegance over excess माने जते बळे आपण ताको खजुराहो संगे कंपेयर करूचंती खजुराहो is more there the sensuality is more bold but the sensuality that you find in Mukteshwara temple, Rajarani temple and many other temples of Kalingan school okay तो सेथरे कोन ना elegance over excess okay and the sensual representation okay especially the amorous couples the mithunas that is graceful sensuality okay it is not excess it is elegance over excess these figures visually soften the temple and make it relatable to human emotional experience okay next है the Vyala and Gajasimha guardians तो जोटा कि आपण एंटर करूचंती टेंपल को
तो सेतल देखुचंदी ओके द गजसिमस the Vyala or Yali hybrid animal creatures act as liminal protectors guarding the devotee's movement into sacred space. The Gajasima compositions, okay, the lion subduing the elephant, seen at Konark at Lingaraj, symbolize triumph of spiritual discipline over ego and ignorance. Okay, very, very important. Triumph of spiritual discipline over ego and ignorance. These images guide inner transformation through symbolic confrontation. Okay, so inner transformation of the devotee. Tapare Navagraha panels. The Navagraha above doorways etc. act as cosmic regulators, ensuring harmony with celestial forces before entering the inner shrine. Their placement as thresholds reflect the Odishan emphasis on cosmic alignment in daily worship. ओके सो नवग्रह पूजा करिकी आपण टेंपल भितर को पहुंचती गर्भगृह भितर ओके सो एटा 302 वर्ड्स रो रही जो मैंने मेन्स क्रैश कोर्स जॉइन करचंती तो एगुडा आपण आपनकर मेन्स क्रैश कोर्स बैच रे फोल्डर रे ही पाई जिबे ऐप रे ओके तो आप भितर आउ कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे आपण यू कैन टेक इट डाउन एट योर ओन टाइम आउ बाकी जो माने यूट्यूब रो देखुछंती पॉज करिकी जोटा आपण को इंपोर्टेंट पॉइंट्स अच्छी फ्रेजेस अच्छी जोड़ा मु कहूची ताको आपण को खाता रे लिखि दे परिबे क्वेश्चन 15 को आसन एग्जामिन टेंपल रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स लाइक रथ यात्रा इन शेपिंग आर्किटेक्चरल स्पेसेस एंड क्राउड मैनेजमेंट features in major Odisha temples. Okay, तो कौन से ताले तारो requirement of the question examine तो है directive keyword temple rituals and festivals okay in shaping architectural spaces and crowd management features very important अपन देखुछंती बहुत जगह रे कोन crowd management ठीक रे न होई कि सेठी दला चकटा हे जाउछ कि stampede हे जाउछ so introduction दबा in Odisha major temple rituals especially rath yatra do not simply take place within sacred precincts. They actively shape the temple's architectural layout, open space and movement systems. Temples such as Jagannath Temple, Puri and Lingaraj Temple, Bhubaneswar have been historically designed to manage large ritual gatherings and collective devotional movement. So how ritual shape architectural spaces? So first all processional accesses and open plazas. So the Puri temple precinct features a large ceremonial access along the Bodadanda, the Grand Road, designed to accommodate chariot movement and mass public viewing. Recent corridor development around the Jagannath temple has created wide peripheral movement zones, shaded footpaths, wide peripheral movement zones, okay, shaded footpaths, congregation plazas जोटी की ठिया के लोग देखि परिबे and emergency access routes तुरंत ता भितरे का गोडा हॉस्पिटल ने की जगह पड़ला तो ता रूट्स भी अलग कराई छी in Bhubaneswar the Bindusagar Lingaraj ritual network shapes pedestrian circulation, waterfront ghats and temple forecourts. ओके तेणु को रास्ता रे चाली की सेठी जिबार अछि से एरिया रे ओके जो घाट्स करिका किंबा जो वाटर बॉडीज हला एंड टेंपल फोरकोर्ट्स ओके एगुडा सब डिसाइड ओके द रिचुअल्स दे शेप द आर्किटेक्चरल स्पेसेस तापरे सेकंड पॉइंट हम लिखि परिबा द मंडपस एंड रिचुअल सीक्वेंसिंग द आर्किटेक्चरल प्रोग्रेशन दैट इज जगमोहन ओके तो देउळ रहला तापरे जगमोहन नाट्य मंदिर एंड भोग मंडप allows phased gathering, viewing, performance and ritual staging. These spatial sequences help organize large groups without blocking sanctum access. ठीक अछि तो गोटे फ्लोर रे लोक जाउथिबे सो दैट बहुत गुडे लोक ओके से माने
एक्सेस करि परिबे गर्भगृह को सैंक्टम को एक्सेस करि परिबे ओके जे डीटी अछनी ताको देखि कि से माने गोटे साइक्लिक वे रे बाहरी परिबे आ मोर एंड मोर डीटीज कैन बी अकोमोडेटेड सो डेडिकेटेड फेस्टिवल रूट्स रुकुणा रथ यात्रा ऑफ लिंगराज टेंपल क्रिएट्स a defined ceremonial path to the Mausima temple influencing street width shop placement and settlement edges along the route already eta previous questions hame dekhichu routes are kept clear and visually aligned for ritual movement okay crowd management features linked to festivals so eguda hala important kon kariya achi kon kara hochi zone circulation okay the separate routes achi pilgrims pai priests ko pai service vehicles and emergency response pai tapare queue and access system structured darshan queues during peak season regulated entry checkpoints medical and rest facilities the queue of access systems next technology and coordination police temple administration and local bodies coordinate surveillance public announcements and control movement during high footfall festivals so security part ta bhi plus जेमते कि प्रॉपरली मैनेज हे परिबो लोकंकर मूवमेंट गरिका आ एबे तो ड्रोन्स एंड अदर थिंग्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड ओके देन ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन सपोर्ट सो सेतले आपनकर लॉजिस्टिक्स जोडा स्पेशल ट्रेन से टाइम रे आपनकर रनवे टेम्पोररी रेस्ट शेड्स फर्स्ट एड कैंप्स एंड वॉलंटियर नेटवर्क सपोर्ट ओके सपोर्ट द विजिटिंग पिलग्रिम्स तापर अगेन टू लाइन द कंक्लूजन सो अराउंड 304 वर्ड्स रो हमरो आंसर रहिछि एग्जैक्टली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन 20 मार्क क्वेश्चन 300 वर्ड्स ओके सो 11 to 15 we have seen okay now we will go to 16 to 20 ताले हमरो टोटल टा कंप्लीट हे जिवो आ रिलेटेड जदि किछि डाउट्स आपनकर अछि सो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी at 9437002210 ओके जदि किछि स्टडी रिलेटेड की प्रिपरेशन रिलेटेड आपन को जानिबार किछि अछि कि यू हैव एनी क्वेश्चंस 16th number question के असंतो assess the conservation challenges of coastal and inland Odisha temples. Salt laden winds, cyclones, biological growth, urban pressure, and suggest ASI or state level strategies using case studies. जोड़ा कि हमारो सबुठु अपन कहि परिबे जोड़ा कि कोस्ट लाइन्स रे अछि लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल हैला कोणार्क टेंपल हैला टू सम एक्सटेंट लिंगराज टेंपल हैला लिंगराज टेंपल कोस्ट रे तो एते ये नहीं बट अर्बन पॉपुलेशन रे प्रेशर बढ़ुची ओके सो introduction 2 lines of Odisha's sacred landscape contains both coastal temples and inland temple complexes each facing distinctive environmental and human induced conservation pressures while Konark and Jagannath temple at Puri face marine corrosion and cyclonic stress Lingaraj temple Bhubaneswar deals with biological deterioration and rising urban encroachment thus conservation must be region specific and adaptive okay so deterioration factors kono kahi ki ए temples गुडा को okay challenges अछि तो first हला coastal exposure okay salt laden winds जोडा की coastal temples गुडा sea breeze carries chloride and sulfate salts that penetrate stone pores and crystallize leading to surface scaling and granular disintegration Konark's laterite and chondrolite stones are particularly vulnerable to this salt weathering cycle requiring repeated treatment. Excuse me. Then cyclones and extreme weather events. Odisha's coast is cyclone prone. Okay, बहुत गुड़े cyclones. सबु वर्ष कया गले आसुजी. Okay, high intensity winds cause damage to temples superstructure, flagpoles, boundaries, walls, and services. Lord Jagannath temples, okay, precinct requires post-cyclone inspection protocols after every severe storm. तापरे biological growth, okay, जोटा कि inland microclimate issues,
Inland micro humidity and shade allows lichens, fungi and moss to colonize surfaces, trapping moisture and weakening sculpture details. Lingaraj temple exhibits consistent biofilm formation on shikhara zones and molding layers. Then urban pressure and unregulated tourism. So traffic vibration, dense settlement, shop encroachments, unplanned drainage, okay, draining stress temple foundations. Okay. Rapid tourism has increased load on heritage spaces in Puri and Bhubaneswar, requiring controlled movement planning. So case studies of conservation strategies, Sun Temple Pine, periodic desalination, that is poulticing, stone consolidation, chemical cleansing, controlled drainage and windbreak vegetation around buffer zones. Jagannath Temple Puri Pai, heritage corridor creates a 75 meter buffer zone, shaded pathways, queue routing, pilgrim holding areas and emergency access to improve safety. Lingaraj Temple Bhubaneswar, the Ekamra Khetra plan realigns streets, restore ghats, removes encroachments, improves water flow and creates pedestrian priority zones. Okay, so eta amara around 300 words hi achi. Now question 17 ke asantu. The Bada Gondi Mastaka is a unifying grammar, not a rigid formula. Okay, so the vertical profile of a Odishan temple, Bada, okay, tapare Gondi, tapare Mastaka, substantiate with variations seen across Mukteshwara, Rajarani, Megheshwara and Brahmeshwara temples. Now, eita tike obviously higher level of more analytical question ache, direct question nuha. तो एथरे कौन ना आमे मेघेश्वर और ब्रह्मेश्वर टेम्पल टा जनरली पढ़ू ना कहीं ना सेटा केबे भी पढ़ी नहीं आगुरु ठीक अछि सो एई डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन आल्सो ओके किंतु किछटा पॉइंट्स अपन सु नहीं परिबे जोडा अलगा आंसर्स से लिखि हे अपन लिखि परिबे त सो इंट्रोडक्शन टा देखंतु इन कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ बाडा गोंडी मस्तक दैट इज द बेस द स्पायर एंड द क्राउन. It provides a shared architectural language across temples. However, this is not a rigid or uniform template. Artisans applied the grammar flexibly, adjusting scale, ornamentation and structural emphasis to suit period, patronage and aesthetic vision. जो राजा को समय रे जो मंदिरटा हैला से राजा को जदी सेटा भल डाउन नथला किबा तांको टिके अलगा किछि स्टाइल दरकार थिला तो आर्टिसंस माने से हिसाब रे करिसंती ओके तो प्रथमे बाड़ा और द वर्टिकल वॉल और बेस divided into molded zones such as the Pabhaga, Jangha and the Baranda. The plan could vary as 3 Ratha, Pancharatha, Saptaratha. Okay, even Navaratha temples are also there. Having variety to wall projections. Okay, then the Gondi or the spire or the superstructure. Usually a curvilinear Rekha Deula over the sanctum and a Pida Deula with tired pyramidal form over the Mandapa, Jagamana, upar joda. Then vertical ribs or pagas emphasize upward movement. Then the mastaka or the head or the crowning element consists of beki. Beki कौन? Beki टा हैला the connection between the gondi and the mastaka. Okay, हमारे जिम्ती body रे बेकोटा connect करची ना gondi की आउ मुंडो को तेणु so exactly same जिंस. Beki अमलाका खपुरी and कलश giving compositional completion and symbolic elevation. Variation across the 4 temples जोड़ा से पहुंचा चंदी. Mukteshwar temple 10th century small scale but highly refined distinctive torana तर already हमें प्रथम 10टा क्वेश्चन रे मुक्तेश्वर टेम्पल टा डिस्कस करथिलु तार इंडिपेंडेंट तोरण is not associated or attached to the main temple okay and detailed lattice windows demonstrates experimentation within foundational grammar तापरे Rajarani temple 11th century रा uses Pancharatha plan with a taller almost cylindrical gondi. Okay, miniature spiralets, okay, or the Uru Singha create vertical plasticity. ये जो miniature spiralets, okay, ये जो Uru Singha कहला, एटा हमें नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन स्कूल रे आपको अंग शिखर कॉन्सेप्ट कहूछु अंग शिखर
अंग शिखर ओके अंग शिखर कॉन्सेप्ट कह जाउछ स्मूथ सैंडस्टोन क्रिएट्स अ सॉफ्ट स्कल्पचरल फिनिश तापर मेघेश्वर टेम्पल 12th सेंचुरी adopts the सप्तरथ प्लान इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी जिते रथ माने वर्टिकल प्रोजेक्शन इंक्रीज हम कॉम्प्लेक्सिटी सेतिकी बढ़िबो सेतिकी आपण बड़ लॉफ्टी किंबा हाई टेम्पल करि परिबे नै ओके सप्तरथ प्लान इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिच carvings of dancers musicians and animals shows flexibility in wall articulation and surface ornamentation. Then the Brahmeshwara temple, that is 11th century, represent maturity of style, clear and balanced Badagondi Mastaka hierarchy, subsidiary shrine reinforces axial and spatial coherence. Comparative examples अपन देखिए लिंगराज टेम्पल रो नहीं परिबे कोणार्क टेम्पल रो नहीं परिबे 297 वर्ड्स एटा रहला 300 वर्ड्स रो तीनटा वर्ड कम okay now we will go to question 18. Question है how do gateway forms that is the तोरण door jam composition okay जो door रे कौन materials use होची door रो style टा कौन and window treatments evolve across early to late Odishan temples illustrate with precise example एटा भी बहुत ही specific example गोटे किंबा question गोटे आरो किछिटा parts आपण use करि परिबे आपण को आंसर रे ओके डायरेक्टली ई क्वेश्चन टा पडिबो टिके चांसेस कम से कहली प्रथम 10टा क्वेश्चन डायरेक्ट थिला सेगुडा पढिची आगुरु तेनु सेगुडा पढिबार संभावना अधिका लास्ट 10टा क्वेश्चन बेसी एनालिटिकल अछि सेटा समय थिला हम जदी पढि दबा आ किछिटा पॉइंट से थ्रू उठेबा ताहले जदी किछि गोटे सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी पढला टेम्पल आर्किटेक्चर नै कि हम सेटा खरि दे परिबा तो इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबा इन ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर द इवोल्यूशन ऑफ गेटवेज और तोरण डोर जैम कंपोजिशंस एंड window that is the jala patterns reflect both artistic innovation and ritual function from early temples like Mukteshwara to later monuments like Rajarani, Megheshwara and Brahmeshwara these temples develop greater refinement symbolic depth and sculptural sophistication right so eta hame underline kar de pariba तो फर्स्ट गेटवेज को आसंतु कि तोरण मुक्तेश्वर टेम्पल 10th century introduces the celebrated art torana with pearl string motifs, scroll work, peacocks and female figures. This torana acts as ceremonial threshold, visually separating the sacred space from the outer world. Okay, it is independently standing structure. It is not connected with the main temple. Okay. इंडिपेंडेंटली स्टैंडिंग जेमति कि आपनकर लेट्स से लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल रे जो हमरो गेटवे जुडा अछि चारिटा द्वार सेटा कोन दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पल स्ट्रक्चर ओके इन लेटर टेम्पल्स लाइक राजारानी एंड रामेश्वरा द एम्फेसिस शिफ्ट्स फ्रॉम फ्री स्टैंडिंग आर्चेस टू आर्किटेक्चरली इंटीग्रेटेड एंट्रेंस पोर्शेस जोटा में देखो छथि व्हाइल स्कल्पचर एंड एलिवेशन रिप्लेस द नीड फॉर सेपरेट तोरण स्ट्रक्चर नेक्स्ट द डोर जैम कंपोजिशंस डोर रो ओके स्ट्रक्चर टा जो डोर पाखे जो आपनकर से सब आर्किटेक्चरल जिनसोडा जोडा करा हुए सो मुक्तेश्वर डेवलप्स द कैनोनिकल ऑर्डर दैट इज द मोल्डेड बेस खुर कुंभ एंड पट्ट ओके वर्टिकल जैम shafts with naganagini and lintel crowned by kirti mukhas. Okay.
Rajarani temple refines this with taller, more slender jambs, deeper carvings and more sensuous Naika and guardian figures. Tapare Brahmeshwara Mandirare, it marks maturity. The door frame becomes highly ornamented, filled with dynamic scrolls, flying celestial figures and directional deities indicating expansion of symbolic storytelling. Okay. Next, window treatment. Okay, so windows जो जाला की जो जाली patterns उड़ा, so the jala or the lattice stucco. Mukteshwara introduces diamond pattern stone jali. Windows on the Jagamohana, balancing ventilation with privacy and light control. Rajarani enhances the lattice system using fine grained sandstone, okay, producing sharper perforations. Perforations माने अपनकर जोड़ा holes करिका, and deeper shading effects. By 12th century, such windows not only ventilate but also soften interior illumination, creating a sacred visual atmosphere. Then Megeshwara temple, it demonstrates how established vocabulary, okay, that is jambs plus lattice, is applied to a more complex Saptaratha plan, combining rhythmic wall projections and lively friezes of dancers, musicians and animals. Okay, it 300 words ro answer ache. Then question 19. Examine the sculptural workshops and artisans guilds behind Puri Bhubaneswar Konark monuments. What material evidence helps attribute hands, schools or ateliers? तामाने कौन जे बनई चंदी सबू. Okay, so सेमाने basically को श्रेणी रो थिले, को गिल्ड रो थिले. Okay, artisan guild सब थिला, तो सेमाने केमती कौन काम करथिले और को गिल्ड रो सेमाने थिले. Right, so again एटा आर्क एंड आर्किटेक्चर टिके अपनो एडवांस टाइप रो क्वेश्चन अपनो कहि परिबे. द भुवनेश्वर पुरी कोणार्क टेम्पल region developed as a major center of sculptural workshop and hereditary artisan guilds or shrenis that shaped the Kalinga architectural and sculptural style. These guilds, okay, share technical knowledge, iconographic rules and workshop discipline while still allowing individual artistic expression across generations. So, workshop organization and craft network, material procurement and quarry linkages. So, Khondalite ru apanakara bahut gude temples heichi. Temples in this region predominantly use Khondalite with laterite and chlorite for specific sculptural detailing. This network in stone type suggests coordinated quarrying and transport networks, indicating organized guild-based supply systems. तो पूरा तांकर supply chain टा जदि अपन देखिबे, okay. तापरे on-site carving yards or the ateliers, माने सेही मंदिर complex रे ही अपन को sculpting टा करा होतला. एमती नुह कि बाहर कोठु करा है कि तापरे सेठी के होना. Large temple complexes such as Konark Sun Temple reveal evidence of on-site sculptural production with unfinished blocks and partially carved panels found near the monument. This suggests that craftsmen lived, worked and trained apprentices directly at temple sites. Okay. Next, hereditary craft committees or communities. The Stapatis or the architects, the Shilpis or the sculptors, the Karmakars or the metal workers and the Kumbhakars or the terracotta artisans. They worked in interdependent guild networks. Okay. In Puri, record of temple service communities reflect a structured craft management system supporting daily rituals and construction. So, material evidence for identifying guilds or symbols, okay, or the hands. So, mason marks and assembly symbols. So, number engravings, माने कौन ना गोटे stone आ गोटे stone ताको number कराई थी. एटा 1 एटा 2 जेमती फॉर एग्जांपल तो 1 पाखरे 2 टा खंजा हबो. ओके काहे कि अपन जानछनी प्राय बहुत गुडे हमर टेम्पल्स रे ओके मोटार यूज हेनी माने जोटा आज ही हिसाब रे हम सीमेंट कहूछु से इंटरलॉकिंग ऑफ द ब्रिक्स और द स्टोन्स सेटा को बेसिकली ये करथिले. तेणु से नंबर्स थिला तो नंबर एनग्रेविंग्स, अलाइनमेंट मार्क्स एंड कोडेड सिंबल्स ऑन स्टोन ब्लॉक्स हेल्प आइडेंटिफाई डिस्क्रीट वर्क टीम्स एंड इंस्टॉलेशन सीक्वेंस. एटा प्रथम इंस्टॉल हैला.
ताको लगे कि नेक्स्ट इंस्टॉल है तो से जना पड़ा नेक्स्ट टूल मार्क पैटर्न्स चिजल ग्रूविंग okay rasp finishing drilling depth and polish variation allow experts to differentiate workshop styles तने different styles माने different workshops रो एटा हिची stylistic and iconometric traits तो ए जो heading सुडा रहला ओके अपन निज हिसाब रे लेखंतु कोन तासरे लिखिया कथा बुझी गला परे बट कथाडा हला सेटा को अपन को लिखिया रा अछि stylistic and iconometric traits sculptural signatures such as eye shape drapery folds lion Vyala jaw form or lotus petal carvings reveal distinct atelier lineages visible from Mukteshwara and Rajarani to Lingaraj and Konar. Then unfinished sculptures and museum pieces, discarded or incomplete carvings provide direct evidence of technique, sequencing and workshop experimentation. जेमति कि कोणार्क रे हमें देखु कि बहुत गुडे sculptures unfinished रही रही examples Mukteshwar and Rajarani show high refined jamb and lattice work consistent with urban Bhubaneswar craft school. Konark demonstrate large scale organized ateliers capable of integrated architecture and sculptural production. 344 words eta hela which is acceptable plus minus 10% and 330 ভিতর রয়া কথা 344 is also fine okay चेष्टा करिवे प्लस माइनस 10% रे रखिया पे केना समय भी हबन अधिका वर्ड लिखिले गोटे आंसर रे सेटा पुनी मोर समय भी नै जाउची ना लास्ट क्वेश्चन ओडिशा टेम्पल हेरिटेज एंड टूरिज्म critically analyze policy frameworks and community participation needed to balance pilgrimage economy with heritage integrity citing at least 2 temple specific interventions हैला तो लोक तो बढ़िबे एबे बेसी लोक आसिले आपण केमिति टेम्पल टाको प्रोटेक्ट करिवे ओके एते जण पिलग्रिम्स आसुचंदी सो नोइंगली और अननोइंगली दे आर डैमेजिंग इट तारो दीटा एग्जांपल दो पे से कहूच सो इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबा ओडिशा सैक्रेड टेम्पल कॉरिडोर ऑफ भुवनेश्वर पुरी कोणार्क draws large number of pilgrims and tourists every year generating cultural pride and economic livelihood the central policy challenges to expand pilgrimage facilities and tourism services while preserving architectural integrity, ritual continuity and local community rights. Okay. So policy framework jodi hame dekhiba Odisha tourism policy 2022 it encourages temple tourism circuits, infrastructure upgrades and cultural branding. It needs stronger heritage impact assessment, carrying capacity norms, seasonal crowd forecasting and ecological safeguards in core sacred zones. नले कोन ना बहुत लोक जदि अनमैनेज्ड हेबे ताले सेटा मॉन्यूमेंट को अफेक्ट करिवो टेम्पल्स को अफेक्ट करिवो देन ASIN state heritage regulations so they provide scientific conservation standards for stone cleaning, surface treatment and structural stability. It requires coordinated decision making between the Archaeological Survey of India, ASI, the Temple Administration, municipal authorities and Tourism Department for sustained heritage management. Then most important, community participation. Loko mane kemti participate karibe. So local communities like the sevayats, the priests, the craftsmen, the guides, the vendors, the cultural groups are essential custodians of intangible heritage. Okay. Policies must ensure inclusive livelihood planning. एई लोकंकर livelihood टा temple ऊपर dependent. Okay, sacred space ऊपर dependent. तेणु जहाँ भी अपन step नेबे तांको livelihood को okay देखिए नबार अछि. Regulated vending zones, training in heritage tourism and transparent grievance mechanisms. Community participation also enhances respect for ritual protocols and reduces friction between tourism and tradition. Okay, so friction between tourism and tradition केमती आपण reduce करिवे तारे से कहछि तार दीटा मिनिमम एग्जांपल दियंतु सो टेम्पल स्पेसिफिक इंटरवेंशंस प्रथम पुरी रे श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर इट क्रिएट्स अ वाइड प्रोटेक्टिव बफर improves pilgrim pathways adds rest zones and emergency movement lanes ensures smoother crowd control during Rath Yatra reducing congestion and safeguarding temples structural stability तापरे सेकंड भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र redevelopment it reorganizes access roads public plazas ghats parking and pedestrian links near the Lingaraj temple it strengthens
heritage working circuits, controls encroachment and enhances visual harmony of historic code. Challenges कौन? Over commercialization जदि हबो, risk of over commercialization, displacement of traditional workers and erosion of cultural authenticity. Okay, बेसी commercialization हे गले ए सब जिंसो हबार संभावना अछि. So need for timed entry systems during peak events, sustainable drainage and climate resilient conservation plans. Okay, very important. Timed entry system during peak events. Both माने भक्त जे से कोन चाहिबो मु बेसी समय रही मंदिर रे किंतु पीक इवेंट्स रे समस्त सेमती चाहिले हे परिबन. ओके, तेनु गोटे एति की समय आपण रही परिबे गर्भगृह भितरे. ओके, sustainable drainage systems and climate resilient conservation plans. ओके, ए तीनटा माइंड रखथिबे. एटा अलग किछि क्वेश्चन पढले भी सेम पॉइंट्स आपण दे परिबे. ओके, 291 वर्ड्स रो हमर आंसर. इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर लाइन, तो 300 वर्ड्स करिया पई. ओके, सो प्रथम 10टा जो क्वेश्चन हमें डिस्कस कलु ता दियरु ही मोस्टली रिपीट हबो क्वेश्चन. लास्ट 10टा जो क्वेश्चन हमें डिस्कस कलु एटा टिके एनालिटिकल क्वेश्चंस, आपण कांसेप्ट्स आउरी क्लियर ही जिवो. ओके, आउ एमिति किछि भी क्वेश्चन आउ रहिबोनी जोटा कि जहां भी जेमति पकैले आपण आंसर करि परिबेन. ओके, सो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ these materials or these videos, आपण निजर इंपोर्टेंट कीवर्ड्स उडा खाली लिखि देबे गोटे खातारे कि जदि एई क्वेश्चन की एई टाइप रो क्वेश्चन पढला मते एई 12टा कीवर्ड मो आंसर रे दबार ही अछि, एई 4टा पॉइंट्स दबार ही अछि. ओके, तापरे पॉइंट रो एक्सप्लेनेशन जा आपण निज हिसाब रे दे पारे. राइट, तो हमर जो मेंस परीक्षा जो माने लिखिबे किबा जो माने आगु को भी प्रिपेयर करछथि हम आरोहन क्लासेस रे एई तीनटा कोर्स चली मेन्स क्रैश कोर्स आंसर राइटिंग बैच, मेन्स जीएस एंड कंपलसरी टेस्ट सीरीज बैच जो थरे की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 55 टा टेस्ट रोची. आज हमें टेस्ट 12 टा डिस्कस कलु क्वेश्चन. ओके, आउ तापर ठीक सेमती 13 टा ऑप्शनल पे ऑप्शनल टेस्ट सीरीज बैच. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट मु प्रथम जोटा कि हमर फ्लैगशिप कोर्स जोटा मेन्स क्रैश कोर्स आउ आंसर राइटिंग बैच तापर आपण किछ कहबी. एथरे आपनकर ऑलरेडी हमें नवंबर 2 रु स्टार्ट कर सारलुनी. एथरे 7टा प्रिंटेड मटेरियल आपनको इंक्लूडेड रहउची. ओके, तापरे जीएस पेपर 1 2 3 4 एसए कंपलसरी इंग्लिश और ओडिया सब एथरे कवर होची. आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहउची. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2006 टू 2023 सेटा भी इंक्लूडेड रहउची. ओके, मॉडल आंसर्स तारा आउ टेस्ट सीरीज भी एथरे इंक्लूडेड रहउची. टाइमिंग एवरीडे 4 आवर्स रहउची, 4 पीएम टू 8 पीएम. ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दीटा रे अवेलेबल अछि. से जो बुक्स उडा से गुडा आपको प्रिंटेड बुक्स मिलुछ. आपण ऑफलाइन रे नेले भी प्रिंटेड बुक्स मिलिबो, ऑनलाइन रे नेले भी प्रिंटेड बुक्स मिलिबो. ऑफलाइन रे कॉस्ट 7000 रहउची आउ क्लासरूम रो कॉस्ट 10000 रहउची. ऐप रो वैलिडिटी सब आपको रिसोर्सेस उडा ऐप रे मिलि जिवो. खाली प्रिंटेड बुक्स उडा आपण आसी कलेक्ट करिया पड़िबो सेंटर रो. तो ऑनलाइन 7000 रहउची आउ क्लासरूम रो 10000 रहउची. तारो बैच रो लिंक का एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे अछि, आपण देखि परिबे. ओके, ओनली टेस्ट सीरीज भी जदि ना पई चाहउचंती ताले सेटा भी नै परिबे जोथे कि हमरो 55 टा डिटेल टेस्ट आउ तारो मॉडल आंसर पैटर्न हिसाब रे. ओके, एति की वर्ड लिमिट हिसाब रे हमरो रहउची. ओके, तो तारो कोर्स फी 5000 रहउची क्लासरूम पई 4000 ऑनलाइन पई. तारो भी जो लिंक टा आपण पाई छिबे. आउ 13 टा ऑप्शनल पई हमरो टेस्ट सीरीज भी रहउची. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. जो माने इथर को मेंस लिखिबे, जो माने आगु को भी प्रिपेयर करचंदी. राइट, स्टडी हार्ड. नमस्कार.